Okay, so we're going to train legs today and आज मैं आपको walk through कराऊंगा कि how I train my legs and how I approach my leg workouts ताकि मैं ये जो कर रहा हूँ what I'm doing मैं इसको long term के लिए कर पाऊँ. So let's get right into it. सबसे पहले I'm going to do a bit of warm up, not a bit but yeah. उसके बाद मैं थोड़ी सी डायनामिक स्ट्रेचिंग करूँगा एंड देन आई विल गेट टू माय स्क्वाट ट्रैक. सो या लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. अब सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ बिट ऑफ आरडीएल्स एज इन रोमेनियन डेडलिफ्ट्स. अब हमारा जो मेन मकसद है ना, द होल पॉइंट ऑफ आवर वार्म अप इज़ टू गेट द ब्लड फ्लो इनटू द मसल्स. हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो नी जॉइंट्स हैं, उसके बाद जो हिप के जॉइंट्स हैं, जो फ्लेक्सर्स हैं. फ्लेक्सर क्या होता है? जब हम अपनी टांगों को सीधा करते हैं या बेंड करते हैं, दैट इज़ व्हाट फ्लेक्सिंग इज़, आई गेस. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए कीपिंग द वेट वेरी मिनिमल थोड़ा सा वार्म अप करना है. उसके बाद आई एम गोइंग टू डू अ बिट ऑफ डायनामिक स्ट्रेचिंग. डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या होती है? यू आर्ट डूइंग एनीथिंग लाइक होल्ड नहीं कर रहे, यू आर जस्ट डूइंग स्ट्रेच विच आर डायनामिक. लाइक एक होता है कि यू जस्ट होल्ड दैट स्ट्रेच फॉर फ्यू सेकेंड्स, दैट वुड बी स्टैटिक. वर्कआउट से पहले यू शुड अवॉइड स्टैटिक stretches in order for you to perform the exercise as well. अब डायनामिक स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो मसल हैं वो लूज़ अप हो जाए, जो टाइटनेस उनमें होती है वो ख़त्म हो जाए. उससे क्या होता है, फिर हमारी जो इंजरी है, जो इंजरी बाबू हैं, वो अवॉइड कर सकें हम. क्योंकि आवर मेन गोल इज़ कि जो हम कर रहे हैं ना, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए कर पाए, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं 60s में 50s में हों तो हमारे जो जॉइंट्स हैं दोज वुड बी हेल्दी एज वेल. लाइक सिर्फ ये ना हो कि हम बस 20s और 30s में जो है वेट मारते रहें पागलों की तरह, और फिर बाद में पता चले कि जो हमारे जॉइंट्स हैं दे गेट फक्ड. सो यू नो वी गोटा मेक श्योर दैट we're getting these big boys warmed up. क्योंकि जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, they warm up before even running, you know. इससे क्या होता है कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. अब मैं करूँगा बिल्कुल लाइट वेट से एक्सटेंशंस. इससे क्या होगा, जो मेरे क्वाड्स हैं, जो मेरे नीज़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएंगे. मैं फिर बता रहा हूँ, वार्म अप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक. वार्म अप इसको जितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो उससे भी ज़्यादा दो, क्योंकि दिस विल मेक यू लास्ट लॉन्ग इन द जिम एंड इन द लाइफ. सो या आई फील लाइक अब बॉडी बिल्डर्स को देखोगे ना, जो यंग है वो वार्म अप पे इतना ध्यान नहीं देते, बट जो एक्सपीरियंस्ड हो गए दे फोकस अ लॉट ऑन दिस थिंग. लाइक दे एम्फसाइज के वार्म अप किया करो. क्रिस बमस्टेड भी है ना, जो ओलंपिया चैम्पियन भी है, like 5-6 times or some shit. We look up to him, we all gym guys. वो कहता है कि as you get older you get to understand the importance of warm up. And I'm the old guy as well, so I do understand why warm up is important. I'm going to go with 20-20 की plates, 20 की इधर 20 की इधर, for you know nervous system को activate करने के लिए कि bro let's do that. Ab, first of all, I'm gonna go with few reps. Ab, what this did was made my legs ready for the heavier movements. So yeah, I'm not gonna
bust in reps कि मैं जो है 15-20 rep लगा दूँ. That will deplete me for the bigger lift that is ahead of me. तो उसमें I'm going to save the energy बचा के then I'll get to the next one. अब मैं करूँगा direct 20-20 की 2 इधर और 2 उधर. अब this is going to be my working set. अब जो चीज़ मुझे 2021 से help की है ना to lift strong weights, वो ये कि first of all मैं वार्म अप सेट रखता हूँ. जैसे 20-20 की प्लेट थी, उस पर मैं ज़्यादा रेप नहीं लगाता. लेट्स सपोज यू आर डूइंग इंक्लाइन डंबल प्रेस. उस पर क्या है कि आप अगर 40-40 की लगा सकते हो तो आप 20 वाला डंबल पकड़ो, गो फॉर 5-6 रेप्स. 30 वाला पकड़ो, गो फॉर 8 रेप्स और 6 रेप्स. और जो मेन सेट है, मेन जूस जो है आपका, विच इज़ दैट 40 kg, दैट गोल, उसमें यू गोtta मेक श्योर दैट you give every ounce of your being into it. So yeah, I know this weight जो मैंने अभी weight डाला हुआ है ना, this used to be my goal for a very long time कि मुझे इसमें confidence आ जाए. वो confidence ऐसे है, lift after lift after lift. मैं जो हूँ पहले उन weights के साथ करके इसमें energy बचा के then I give everything to this set. And this set now feels okay. So yeah, enough yapping. Let's get to work. I'll tell you कि proper squat करते कैसे हैं, but I want you to observe. We'll go 4 or 5. 1, 2, 4. We're gonna go with 4. 3, 1 more. We can do that. Damn it. Now, depth. Squats में depth is very important. My friends जो मुझे पुराना जानते हैं, my people, इनके साथ I used to work out back in the days. We used to dream about so many things. कि हम ऐसे lift करेंगे, हम इस जगह पे होंगे, that's what we'll do. And I think nothing of that planned happened. जो हमने सोचा था उसमें से कुछ भी नहीं, nothing happened of that. पर एक चीज़ सीखने को मिली कि you have to keep working on yourself. आप पे कोई काम नहीं करेगा. You have to keep building those blocks. वो एक ब्लॉक कर के you have to do that for your own good. अगर आप इसी बहाने बैठे रहोगे ना कि मेरे दोस्त मुझे पुश करेंगे या ऐसे होगा, this is not the main thing that I was gonna say, but you have to push yourself. Second, जो चीज़ें मैं ड्रीम किया करता था ना, we will do. दोस्त तो नहीं है पास, like we are very good friends. मेरे लिए जान तो नहीं देंगे, but yeah. तो हम सोचते थे कि कैमरा लेंगे, we'll have iPhones, we'll have good quality gear, और हम strong होंगे and we'll use pre-workouts and we'll do proteins, और हम ऐसी डाइट करेंगे, we'll lift heavy weights. ये मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, which I'm about to lift no matter what. Either I die, either I fucking die trying. I don't know what I said, but anyways, enough of yapping. Let's get to work. अब मेरी PR है इस weight के साथ 1 rep max, but there was a spotter मेरे पीछे और I did like 2 reps with the help of spotter. जो second था वो spot किया था मुझे boy ने. Now I have no clue, but I know one thing: not gonna stay down. I'm gonna get the fuck up. I'm gonna get that weight. For all those people who have even a little hope or believe in me, believe whatever, that I will do it, that I'm strong. I don't care what other people say. I'm gonna do it for myself, for my loved ones, for the people who look up to me. That's what strong men do. They fucking fight.
Rabbi. Woo! 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 Oh, damn. One. Oh, fuck, I got it. I don't know whether I would get the second one, but I have to try. I can get it. I can get it. Nah. Oh, damn. I had a little doubt in my head that I won't be able to do it. I think that was the doubt that kept me from pushing it up, but still got one. I'm okay with that. अब main thing about my workouts is पहले compound, give it your everything, sort of powerlifting you can say, 1 rep max thing. उसके बाद I hop onto holy shit. I hop onto isolation movements. Okay, I do those with high reps. I don't. Okay, अब 60 इधर 60 इधर. Squats में heavy थी, 1 compound हो गई. अब हम क्या करेंगे? We will do a little bit of hamstring work here. Hamstring और glutes. Quads भी आते हैं, but yeah. मैं क्या करूँगा? Feet का stance wide, or as much higher as I can go. I would try to get failure reps जितना मैं लगा पाया without assisting और full depth के साथ. Depth matter करती है बहुत ज़्यादा. So let's go. I'll grab it from here. I'll try to get as many as I can. Shouldn't lock your legs like this. इतनी रखनी चाहिए. नहीं तो knees पे issue आता है. But I'm invincible, I can do that. Let's get a few more. It's not failure. Oh damn. Squats में ना मेरी lower back थोड़ी सी वो गई, वो आ गया, load आ गया. Because I don't really wear belts. I feel like belts are like gay. Shows that you're gay. Damn. Oh, damn. Hurts so bad. Fuck. My quads are firing up right now. Oh, damn. Hurts. That's what leg day is supposed to mean. Failure. That's low. You can go higher. I think squats have and leg presses have fired up my quads. Andrew wala. Woo! Oh damn. Oh god. I know it hurts. Come on. I'm not an animal. Maybe I am. Just make these songs. Fires me up. That inner animal. Nah. Damn it. That sums it up. One more of it. अब I don't know. ये vlog है.
Yeah, workout video. I don't know about that. What I know is, always dreamed of doing that. Everyone feels like they're not doing enough. I feel that too. But even if I do so much, I'm hard on myself that I'm not doing enough. I should do enough. It's not enough. It's not changing anything. There's no point of it. Must be doing more. But I feel like God has His own timings. Allah ke jo kaam hai na, they're divine. The timing is so perfect. You're doing exactly what you're supposed to do. There's nothing that you would do better than what you're doing right now. और मेरे ख्याल में, if you want to do good, if you want to do better, Allah आपको देगा. But if you're deserving of it, if you've earned it, considering the fact that you don't have it right now, lucky there is like हर एक को आजमाता है. So keep doing it. I know it's hard. I know you don't want to do it, but just for God's sake, do it. Oh, damn. Oh, I know I'm not doing full range of motion because I don't think it's gonna come up. Feel like they're gonna explode. I don't know. If you like what I'm doing, if you're interested in the vibe, subscribe, I guess. If you don't, then it doesn't really matter, to be honest. I'm documenting it for myself right now. I don't care about anybody. It's for my own self. I owe this much to my little Abdullah that I used to be. It was his dream. It's not my dream. It was his dream to make sure I don't disappoint that guy. The insults, the bullying, the looking down on myself. People used to do that. I don't see them doing that anymore. Not anymore. Not anymore. Let's do some RDLs for, hamstring movement. For that extra push. Let's do it with 30s. अब मेरी जिम कोई इतनी खास fancy नहीं है, but I like it. Let's crowd it. I'm definitely out of feel right now. It's not the best day, but it's one of the good days. Alhamdulillah.